Hello everyone. Today we shall talk about what are the various factors which affect the permeability. How we can define permeability? Permeability is the property of a porous material which permits the passage or seepage of water or a fluid through the interconnecting voids. So what are the factors? Let us proceed. Based on the Pascal's law for laminar flow, Taylor has given a theoretical expression for flow through soil medium. So here we can see K is the permeability and K is equal to d square S plus d square S into density of water by viscosity into EQ by 1 plus C into C. So you can see here ds is nothing but effective particle size, density of water gamma W, eta is the viscosity of permeant. Permeant may be the water or the fluid. E is the void ratio of the soil. C is the shape constant or factor. So now the first point, the first topic which is going to influence the factor, the permeability is the size of soil particle. यदि साइज बड़ा है तो परमिटिविटी ज़्यादा होगा, साइज छोटा है तो परमिटिविटी कम होगा. Let us see the flow of gravitational water through the minute pore passage of soil is analogous to flow through capillary tubes. पानी या कोई फ्लूइड जब सॉइल के थ्रू गुजरता है तो इट इज जस्ट लाइक ए फ्लो थ्रू द कैपिलरी ट्यूब. इट इज एनालोगस सिमिलर टू द फ्लो थ्रू द कैपिलरी ट्यूब्स. जैसे जमीन से पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है तो कैपिलरी एक्शन, सरफेस टेंशन भी वहाँ काम करता है. और उसी तरह से जो है जैसे कम डायमीटर की पाइप में पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, वैसे ही पानी भी जो है, पानी जो है सॉइल में ग्राउंड वाटर टेबल जो है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है. तो वी कैन सी हाउ द साइज इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस. दिस इक्वेशन वी हैव already discussed in the previous slide. Suppose density of water, viscosity, void ratio, all are constant. In that case, what we can say? It is the permeability is the K is the permeability is the square of the grain size, right? So that it means K is proportional to d square also we can say, or d square S we can also say. And as I told you, the permeability will be high in coarse grain soil compared to fine grain soil. We can see this figure. Suppose water is going in upward direction, water table मान लीजिए नीचे है, so what is going to happen here? Or suppose we are going to pass the water through a soil media from bottom to top. तो यहाँ clay है तो clay के through permeability कम होगा. You can see low permeability to the high permeability. Here size of the particles are bigger. Clay के ऊपर जो particles है वो बड़े size के हैं तो permeability ज़्यादा होगी उधर. We can also see this figure. Here volume of void is more, large particle size. Particle की size बड़ी है तो void बड़ी होगी, right? Volume of void ज़्यादा होगा. और particle अगर छोटा है तो वॉल्यूम ऑफ void छोट कम होगा. तो इस सवाल से हम क्या कह सकते हैं कि साइज यदि बड़ा है, पार्टिकल साइज बड़ा है तो परमिटिविटी ज़्यादा होगी, और पार्टिकल साइज अगर छोटा है तो परमिटिविटी कम होगी. लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल्स. स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सॉइल पार्टिकल्स also affect the permeability. Higher the specific area, lower will be permeability. जैसे एक बड़े सॉइल का टुकड़ा को लें हम लोग और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दें तो क्या होगी, उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी. और उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स से के थ्रू अगर पानी को पास कराया जाए तो परमिटिविटी कम होगी कंपेयर टू बड़े साइज के पार्टिकल्स. अगर बड़े साइज के जैसे हम लोग पढ़ा कि हाउ the size of the particle is going to influence, तो यहाँ क्या है, सरफेस एरिया.
अगर पार्टिकल बड़े पार्टिकल को तोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल्स करते हैं, छोटे पार्टिकल्स की सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, परमिटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो फाइन ग्रेन सॉइल हो जाएगा, राइट। सो दैट मीन्स the surface area, higher the surface area of the particles, lower will be the permeability. Next we can see properties of pore fluid. How the properties of pore fluid is going to influence. This formula we have already seen in the previous slide. The equation indicates that permeability is directly proportional to the unit weight of water and inversely proportional to its viscosity when other factors remains constant. Let us see this equation. यदि बाकी एक कांस्टेंट है, साइज ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज फिक्स्ड, तो क्या हम कह सकते हैं, परमिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर. So though the density of water does not change much with the change in temperature, viscosity टेम्परेचर पर निर्भर करता है. जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी कम होगा. इट इज रिटन हियर, बट देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर. विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम होगी, टेम्परेचर घटने से विस्कोसिटी बढ़ेगी. जैसे हाई विस्कस लिक्विड और वाटर कॉज रेसिस्टेंस इन फ्लो. यदि टेम्परेचर कम है तो विस्कोसिटी फ्लूइड की वाटर की ज़्यादा है, तो फ्लो सॉइल के थ्रू फ्लो कम होगा, यानी परमिटिविटी कम होगी. हेंस लोअर विल बी दी परमिटिविटी. तो हम क्या कर सकते हैं कि विस्कोसिटी, यदि अगर विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी कम होती है और वो फ्लूइड जो है या वाटर जो है वो सॉइल के थ्रू इजीली पास होगा, यानी परमिटिविटी ज़्यादा होगी. आप इस इक्वेशन को देखिए, यदि एक ही आप फ्लूइड लीजिए या वाटर लीजिए, water, let us see the example of water is given here, because density of water and density of water, it is not going to change when the temperature is going to change, as it is written here. So what is going to happen, अगर उस पानी को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप सॉइल मीडिया से पास कराते हैं जिसकी परमिटिविटी K1 मिलेगी आपको, विस्कोसिटी एट दैट टेम्परेचर eta 1 is nothing but the temperature. It indicates the at a certain temperature viscosity eta 1, and another temperature viscosity eta 2, and permittivity will be K2. So this equation we can also write like K1 by K2 is equal to eta 2 by eta 1. So अगर कोई न्यूमेरिकल्स आपका ये दिया हुआ है कि इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर विस्कोसिटी इतनी है तो परमिटिविटी उसकी दी हुई है, इस at this temperature whatever the viscosity is there, permittivity is like this, and at different temperature viscosity is also given. So what will be the permittivity, that also we can calculate by this equation. So what we found here, how the pore fluid, that means water or any fluid, is going to influence the permittivity. It depends upon the viscosity, and viscosity depends upon the temperature, and viscosity is inversely proportional to the temperature. More temperature, low viscosity, high permeability. Like that also we can say low temperature, high viscosity, low permeability. क्या कर सकते हैं, विस्कोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर यदि ज़्यादा है तो विस्कोसिटी कम होगा, और कम विस्कोसिटी होने से परमिटिविटी ज़्यादा होगा. अगर टेम्परेचर कम है तो विस्कोसिटी हमारी ज़्यादा होगी तो परमिटिविटी भी कम होगी. ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि हाउ द पोर फ्लूइड इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द परमिटिविटी. नेक्स्ट वी कैन सी वॉइड रेशियो. This equation also we know. Suppose these parameters, the size of the particles, density, viscosities are constant. In that case we can say
K is proportional to the EQ by 1 plus C. So for a given swell, greater the void ratio, higher is the value of the coefficient of permeability. That means what? जैसे 0.1 मान लीजिए या 0.2 अगर void ratio है तो 1.2 हो जाएगा और 0.2 का आप ये अगर 0.2 की को वैल्यू पता करिए कितना होता है. So what we can say, higher the void ratio, higher the permeability, higher the value of the coefficient of permeability. Permeability will be more, right? Next point we can see the structural arrangements of the particles. This also influence the permeability. Water flows through voids and connectivity of these voids depend upon the structural arrangement of the soil particles. Connectivity of these voids depends upon the how these soil particles are arranged in nature. If in case of fine grained soil, if the soil particles are arranged in flocculated, we have already studied about the flocculated structure and dispersed structure. So this is the example of flocculated structure. That is the edge to edge content, and this is the face to face content. So we can see here dispersed structure, hence flocculated structure has more void in than the dispersed soil. You can see in flocculated structure का जो soil है उसमें void ज़्यादा होगी तो permeability भी ज़्यादा होगी, और dispersed structure की में void कम होगी तो permeability कम होगी. We can see stratification of soil, the layering of soil below the ground level, or suppose wherever the in case of normally it found in the sedimentation type of rock, तो आप देखिए different types के layers है यहाँ, ठीक है. Here also layers are there. So in case of stratified structure, stratified means layer wise structure, the permeability varies according to direction of the flow. जैसे पानी आपका or fluid passes through this parallel to the bedding planes. It has been observed that when the flow of water is parallel to the bedding planes, the permeability of the soil mass is higher. यदि इस साइड में पानी मान लीजिए है, इधर से इधर अगर फ्लो कर रहा है तो क्या है, these are the bedding planes, right? देखिए लेयर वाइज स्ट्रेटिफाइड लेयर्स इज नथिंग बट द बेडिंग प्लेन्स. सो इधर से पानी अगर इस साइड पास करता है तो परमिटी ज़्यादा होगी, राइट, कंपेयर टू इफ द सॉइल इज इफ द वाटर इज पासिंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन. यदि ऊपर से नीचे की तरफ, दैट वी कैन से परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन्स. यदि इफ द वाटर पासिस फ्रॉम top to bottom, right, perpendicular to the bedding plane, these are the bedding planes, in that case permeability will be less. See, permeability of soil deposit also depends upon the structural defects. यदि आपका कहीं soil में cracks है या fissures है, fissure is the longitudinal depression in the soil, in that case the permeability will be different. So it also depends upon the cracks and the fissures. Definitely more permeability will be there. Variation in the permeability value we can find. The next we can see the degree of saturation and other foreign matter. What does it mean? Suppose the soil is partially saturated, then some voids may contain entrapped air. यदि partially saturated means what? We know that partially saturated means the air is also there, and moisture is also there, solid particle is also there. So partially saturated means air is entrapped. So then these entrapped air packets may block the flow path, which may reduce the permeability of soil. While if the soil is fully saturated, there will be no any such blockage. जो एयर इंट्रैप्ट होने से जब तक हवा जो है मिट्टी में रहेगी तब तक जो है परमिटी कम होगा, क्योंकि हवा क्या करता है, रोकता है, पानी को फ्लो को रोकता है. लेकिन यदि सभी वॉइड्स पानी से भर जाएं, यानी सॉइल फुली सैचुरेट हो जाए, तो फ्लो जो है ज़्यादा हो जाएगा. सो व्हाट वी कैन से, इन केस ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल परमिटिविटी विल बी लेस कंपेयर टू द फुली सैचुरेटेड. सो सैचुरेशन, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन आल्सो इन्फ्लुएंस द परमिटिविटी. Partially saturated, partly saturated, and fully saturated.
Now we can see that suppose any foreign matter or organic matter is there in the soil. So at the time of permeability what is going to happen? ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो voids को चॉक करता है, तो परमिटिविटी को अफेक्ट करता है, राइट. Presence of organic matter or foreign matter can choke the flow, thus decreasing the permeability. Next we can see the effects of adsorbed water. Adsorbed water we have already discussed here in the clay minerals. Adsorbed water surrounding the fine soil is not free to move. हम लोग जानते हैं, so the clay particles have the negative charges और उसके चारों तरफ water particles है, these are the negative charge, water layer with positively charged. So this is actually bound together by the strong bond. ये चारों तरफ जो है it does not move easily. आप यहाँ भी देख सकते हैं ये क्ले पार्टिकल्स का है, फाइन ग्रेन सॉइल केस में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और ये पॉजिटिवली चार्ज जो है स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं इसके साथ. सो दिस पार्ट एडजॉर्ब लेयर कहलाता है, एडजॉर्ब वाटर कहलाता है. ये पानी आसानी से मूव नहीं करता है. तो होता क्या है कि सपोज दिस इज द सॉइल पार्टिकल्स, देयर सम सॉइल पार्टिकल्स आल्सो हियर, सॉइल पार्टिकल्स आल्सो हियर इन द सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल. तो क्या होगा कि ये लेयर जो है इट क्रिएट्स हिंड्रेंस in the flow of water or the seepage of water through the soil media. So definitely permeability is going to decrease. Void space को कम कर देता है. Adsorbed layer. These are the adsorbed layers. This is the adsorbed layers, right? So surrounding the fine grain particle is not free to move and reduces the effective pore space available for the passage of water. Hence reduces the permeability of soil. So these are the parameters. 8.7.